Hello, CFA Nation. Gabe. Nick. Apparently, I'm on the other side. Bathroom, Gabe. Point to the bathroom. Always point to the bathroom. And we're here today to bring you guys another installment of Cricket Tuesday. Now, Nick, I got to say I'm very excited for this one. And first and foremost, yes, absolutely. Biased. Yes, I am biased because we're talking about the Women's World Cup. And of course, my West Indies has got the first shot in New Zealand at home. You know, they talking some crazy nonsense, 17% chance of winning. You better disrespect my girls. But Nick, it's been a while since we watched women's cricket. And, you know, I think the very first match we watched, I can't remember who it was, but Smriti, I wanted, was it the IPL women's before we watched their tournament that they had. Yeah. Yeah, they had that tournament, and we got to see Smriti play. And man, I was so fascinated at what a great cricketer she is, but also a very beautiful woman. So today is in spirit of the World Cup, and of course, the very first women's IPL match we saw, which was I forget this team Smriti plays in. It's just a pink uniform. I can't remember. Super Songs, the Trailblazers? No, I think she's a Super Sonic. I can't remember. Trailblazers. There you go. And yeah, man. So like we are going to be doing this Breakfast with Champions on Smriti, learning a little bit more about her. Because I'll be honest, Nick, I tried to DM her a few times. She didn't answer. I got blocked. I should say I got us blocked on Twitter. What? I just said, how you doing? You know, didn't go over well. I don't blame her, Smriti. If you're watching this, very, very smart woman in more ways than one. And we know it's a ghost account, right? We know it's a fake account, whatever you want. Burner. I'm not sure what the term is these days, but we have Smriti in our live chats all the time, right? That's her. That's her. We got MS Tony. It's her, yeah, because we see her sometimes batting at the crease, and she's in the comment section. So, like, in between balls, she's like, "You guys are doing a great job." But yeah, we're excited to check out this Breakfast with Champions. I'm excited as well. Like Gabe said, Women's World Cup Thursday, March 3rd. Mark your calendars, ladies and gentlemen. The tournament starts, and it appears at least his first match between all of it's going to be in New Zealand. And I'm excited to see what is going to come of this World Cup. What's going to happen? You have some fantastic teams. You got the Bangladesh women, South Africa, New Zealand, West Indies, Australia, England, Pakistan, India. Those might be the big hitters right there in this match, in this tournament. It could be anyone's tournament, even though we know the India women are going to take it, baby. I'm just kidding. There's some very talented teams out there. Very talented teams. And so we're going to react to this. If you're excited for our reaction and you're excited for Cricket Tuesday, don't forget to like and subscribe. Check out some other Cricket Tuesday reactions we have going on. But Gabe, let's see how Gaurav, the interview master, handles our friend Smriti. Friend of the channel, Smriti, we wish. All right, so let's go ahead and check this out right about now. मेरे को मीडियम पेसर बनाया था पापा ने पहले, क्योंकि मेरी एक्शन थी विराट कोहली जैसी, जो डबल रॉन्ग फुट है ना, जो हम डबल उड़ी मारते हैं वैसे ही मारते। तो क्या बोलते हैं उसको? डबल उड़ी हम बोलते हैं। एक ही लेग पे दो उड़ी मारते। घर पे रहते तो पापा बोलते थे डबल उड़ी क्या मार, मतलब ऐसे। How dare you, Virat Kohli? There is obviously you're such an elegant left-hander, but you're not a left-hander. Yeah. Actually, तो ये कैसे हुआ? Right-hander को left-handed batsman किसने बनाया? Actually मेरा भाई लेफ्टी है, मतलब वो भी राइटी है, but पापा को उसको लेफ्ट-हैंडेड बनाना था। तो बचपन से जैसे भी भैया जब 2-3 साल का था तब पापा उसके सामने लेफ्ट हैंडेड का स्टांस ही लेके खड़े होते थे। पापा वाज अ राइटी बैट्समैन, बट वो लेफ्ट हैंडेड स्टांस लेके खड़े। तो भैया को पता ही नहीं कि राइटी भी पकड़ते बैट, उसको भी पता है कि लेफ्टी पकड़ते। हाँ, तो नेचुरली वो देख देख के भैया लेफ्टी पकड़ने लगा। मेरी और भैया की बैटिंग स्टांस से लेके हर चीज सब सेम है, आपको समझेगा भी नहीं, सिर्फ एक पोनी टेल का फर्क है, लाइक इतना ही फर्क है। तो फिर वो देख देख के फिर मैं भी सिर्फ इतना ही समझा ना कि लेफ्टी पकड़ते हैं, राइटी होता ही नहीं है, पता ही नहीं था कि राइटी भी होता है। तो श्रवण और आपका एज डिफरेंस क्या है? 4 इयर्स। तो 4 इयर्स पे तो जो छोटे भाई बहन होते हैं 4 ईयर डिफरेंस पे तो पूंछ होते हैं वो
बढ़ेगी। एक्चुअली उल्टा था। ओह रियली? मैं बहुत डोमिनेटिव हूँ, मैं अभी भी मैं उसको बहुत डोमिनेट करती हूँ। Oh wow, he doesn't want to hear that. हमेशा बचपन से मैं घर की मतलब ऐसे बॉस ही रही हूँ। स्पॉइल्ड चाइल्ड। हमेशा ही ऐसे होता है। That's the case in my house. My daughter. पैम्पर्ड चाइल्ड। हाँ करेक्ट। पर बैटिंग आपने पूरी उनकी कॉपी कर दी। पूरा देख के। यस, नेट के पीछे बस खड़े होके उसका एक राउंड होता था, बॉल जाके उठा के उसको बकेट में रखने का, वापस पीछे आके उसको बैटिंग करते हुए देखने का। तो शायद 1-2 साल तो सिर्फ इतना ही किया। लास्ट के उसके बैटिंग के सेशन के बाद सिर्फ 10 से 15 बॉल मुझे मिलते थे बैटिंग करने के लिए। उसके लिए मैं 5 बजे उठ के तैयार रहती थी, मुझे आज 15 बॉल खेलने मिलेंगे। So sweet. And this was when you must have been what, 6-7 years old? Yeah. Actually मैं born मुंबई में हूँ। तो I used to when I was 4 or 5 मैं हडकर सर यहाँ पे एक कोच है, उनके पास जाती थी। तो ऐसे इतनी सी थी शायद मैं, और वाइट्स भी नहीं मिलते थे, और मुंबई में कंपलसरी वाइट्स। तो मम्मी ने भैया के कपड़े को काट के मेरे लिए वाइट्स बनवाए। साइज के नहीं मिले, इतनी छोटी थी मैं, 3-4 साल की थी शायद। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा लेदर बॉल पे वाज इन मुंबई ओनली, हडकर सर के पास। भैया की शर्ट पहन के जिसमें भैया की शर्ट नहीं, वो मम्मी ने अच्छे से अल्टर वगैरह करा के लाई थी मेरे लिए। अरे वाह। You played under 19 at a very young age, no? Yeah, I think 11. मतलब 11 when he chose you in the team. कि उस वक्त प्रोसेस भी होता है when you are 11 years old कि बस ये मतलब ये बहुत हाई लेवल का क्रिकेट है। I'm 11. तो 11 इयर्स की थी तब फर्स्ट टाइम जब एक महाराष्ट्र का आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि नेम, एज एंड ऑल, फिर आपका मिडिल ऑर्डर या ओपनिंग है। मुझे कुछ भी नहीं पता था ओपनिंग क्या होता है, मिडिल ऑर्डर क्या होता है, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ बैट पकड़ के बैटिंग करना आता था और उतना ही। तो मैंने पापा को फोन किया कि पापा क्या करूँ, मतलब फॉर्म में क्या भरूँ, ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर। पापा बोले भर दे बिंदास ओपनिंग, क्या होता है। तो ऐसे मैं ओपनिंग बैट्समैन बन गई उधर। पेस रहती थी बॉल में, तो पेस का यूज कर लेती थी, 20-25 रन बना लेती थी। जैसे स्पिनर आते थे आउट हो जाती थी, क्योंकि उतनी ताकत तो थी नहीं स्पिनर्स को कुछ मार पाओ। तो ऐसे करके 1-2 साल ऐसे, 1 साल ऐसे गया। फिर उसके बाद थोड़ा फिर समझा कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है एज अ क्रिकेटर। फिर मेरे कोच से जाके मैं बोली कि नहीं, मुझे बहुत मेहनत करनी है अभी भी, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ सब लड़कियों के सामने। फिर जाके थोड़ा शॉट्स में स्ट्रेंथ आई, एंड फिर थोड़ा 20 से 40s पे आई, फिर 40 से 80s पे, फिर बड़े स्कोर मारने लगी। ये बीवीएल में also वही ओपनिंग? वहाँ पे ना जितना अपन फॉरेनर्स को देते ना, आ जाओ ले लो, वैसे वहाँ पे नहीं। इतनी मेहमान नवाजी नहीं होती वहाँ पे। I was going 2-3, कभी मैंने खेला ही नहीं 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन। वहाँ पे वही 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन। मुश्किल भी होता होगा थोड़ा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा था, कभी गई नहीं 1 डाउन। मैंने फोन करके पूछा एजेंट को, तुम लोग करते क्या 1 डाउन रहते हो तब? आइडिया ही नहीं है ना, हमेशा बचपन से 9 इयर्स की थी, पापा ने बोला ओपनिंग कर ले, तो ओपनिंग करना शुरू किया। पता ही नहीं 1 डाउन 2 डाउन में करते क्या लोग। जो मिताली ने किया था वर्ल्ड कप पे, बुक पढ़ ली तो मैं उधर ही सो जाऊंगी। वो मेरे से नहीं होगा। कॉमिक बुक कुछ भी बुक्स वाला बुक्स नहीं पढ़ सकती। बुक्स ये जो चीज है वही मुझे आई थिंक आई डू नॉट माय कप ऑफ टी। Yeah, she's not alone there. I love reading books, but man, they can put me to sleep sometimes. Oh, sure. Your big moment, of course, when the whole country was cheering for you. West Indies के खिलाफ जो सेंचुरी मारी आपने वर्ल्ड कप में, especially considering that एक टाइम था जो आपको लगा कि आप वर्ल्ड कप खेल भी नहीं पाओगे इंजरी की वजह से, और फिर जाके वो सेंचुरी लगी. That must have been a very special day for you. Yes, actually, West Indies की century was special, but I think the first match which we played against England and I scored some 90 odd runs. My surgery was done on 23rd June. तो सर्जरी 23rd जून को होते ही मेरा ऐसे था कि 5 मंथ्स में मुझे मैच खेलनी है. तो 23rd वो जो 23rd जून की जो तारीख थी, वो 5 मंथ से मैं उठ के एक ही चीज बोलती कि 23rd जून को मुझे इंग्लैंड के साथ खेलना है. सो दैट 5 मंथ्स का जो था वो उस दिन लाइक आफ्टर गेटिंग द वुमेन ऑफ द मैच मुझे ऐसे हुआ कि वाओ, मतलब जो मैं 5 मंथ से 23rd जून कर रही थी, आई थिंक इट्स लाइक पेड ऑफ कि मैं कर पाई. आप लोग जब वर्ल्ड कप से वापस आए, the reception that you got over here, tell me about that. जैसे ही वर्ल्ड कप हुआ हम काफी सैड थे क्योंकि हम 9 रन से हारे एंड वो सब मेमोरीज आ रहे थे कि वही मैच वापस फ्लैशबैक में चल रही थी. तो हम पूरा एक दिन इंग्लैंड में थे शायद, उसके बाद लंदन में, तो कोई भी कहीं भी बाहर नहीं निकला है, सब अपने में ही थे एंड एवरीवन वाज सैड. बस जैसे ही पहुंचे एंड आई वाज लाइक अरे अपन ने कुछ तो अच्छा किया है लगता है. हेलो, इतना अच्छा रिसेप्शन मिला है, मतलब तो फिर वो चीज जो रिसेप्शन हमको मिली वो थोड़ा सा हमको इजी किया कि वो वर्ल्ड कप का जो फाइनल का जो मेमोरीज है वो थोड़ा एटलीस्ट 2-3 दिनों के लिए हम लोग
उस चीज से बाहर निकले एंड देन वी वर लाइक अच्छा ठीक है जो भी है एटलीस्ट हमने लोगों को पता तो चला कि वुमेन क्रिकेट भी खेलती है। इस बारी आई थिंक वो जो फ्लिप होता है ना, जो एडुलेशन हो जाता है कि अब हम देखेंगे, अब हम फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अब हम फैन बन गए हैं, अब हम नाम जान गए हैं, काम जान गए हैं, उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिली होगी आप लोगों को। हमेशा से हम ड्रेसिंग रूम में एक ही चीज बोलते थे कि गर्ल्स वन वर्ल्ड कप विल चेंज द वे पीपल लुक एट वुमेन्स क्रिकेट। सिर्फ एक वर्ल्ड कप, अच्छा वर्ल्ड कप हमको मतलब वर्ल्ड कप जीतना है इन इंडिया स्पेशली। जब अगर वुमेन्स क्रिकेट का नाम होता था तो हमेशा मिताली दी या जुलन दी मतलब यूज्ड टू कम आउट। तो इन दोनों को छोड़ के और 15 की लड़कियों के किसी के नाम नहीं बता रहे थे। बट इस बार आई थिंक वो बहुत अच्छी फीलिंग थी कि सब मुझे नाम से बोल रहे थे, दीप्ति शर्मा ने ऐसे डालना चाहिए था या हरमन ने वो नॉक क्या खेला ऐसे, मतलब तो एक अच्छा फीलिंग रहता था वो। So who are your friends in the team? Well, शिका दी जो मीडियम पेसर है वो उनके साथ मेरी अच्छी बनती है। हैरी दी ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा हॉबीज क्वाइट सिमिलर है, दोनों को भी सोना पसंद है और प्ले स्टेशन बहुत पसंद है। तो sleeping in PlayStation। कुछ भी हुआ तो जुलंदी है ही अपनी। She is the मतलब she is वो जो एक स्वीट एल्डर होते हैं ना जो फैमिली के, मतलब है तो वैसे बॉलर एंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड, पर उनका नेचर बहुत जेंटल है। हाँ बहुत मतलब वो मेरे फर्स्ट टाइम रूममेट थे जब मैं इंडिया के लिए खेली थी और मैं बहुत नर्वस थी, बाप रे जुलन गोस्वामी के साथ पहले बार ही मुझे उनके साथ रहने में रूममेट के तो बहुत तो फिर मैं ऐसे चुपचाप पहले दिन तो शांति से बैठी थी। वो बोली तो इतनी शांति रहती है, मैं बोली हाँ मैं तो वैसे ही बोली। फिर एक दो दिन का थोड़ा बात करने लगे बट द वे उन्होंने वो हैंडल किया और उन्होंने जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक किया मतलब एक ऐसा लगा कि हाँ मतलब आप इनसे बात कर सकते हो, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो ना। उन्होंने जो गैप रहती है वो सीनियर जूनियर की वो बहुत मतलब उन्होंने कम कर दी। एंड सबसे शरारती वेदा या कंपटीशन है वैसे, वेदा, हरमन, सुषमा। वेदा का तो लगता है कि जो मन में बोल देती है तो वो साउथ इंडियन बट एकदम पंजाबी जैसी है वो। मतलब डांस करना अगर ड्रेसिंग रूम में डांस है तो फर्स्ट म्यूजिक लगा के वो डांस फर्स्ट वेदा ही करेगी चालू एंड देन सब ज्वाइन करेंगे। बट हरमन लुक्स लाइक कि मतलब बॉस पंगा ना लो। नहीं वो सिर्फ ऑन फील्ड वैसी है, ऑफ द फील्ड बहुत स्वीट है बहुत। तो ऑफ फील्ड कैसी है? हम पहली बार फर्स्ट टाइम जब रूममेट्स थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तब हम दोनों सिर्फ सोते थे, उठते थे, प्रैक्टिस के लिए जाते थे, आके सोते थे, खाना खाते थे, वापस सोते थे, सुबह उठते थे। तो हमने पूरा ऑस्ट्रेलिया टूर सिर्फ सोया और प्रैक्टिस किया है। सब बोले कि तुम लोग ऑस्ट्रेलिया देखा भी नहीं, मतलब थोड़ा भी नहीं। हम बोले कि नहीं हम तो सिर्फ सो रहे थे। तकिया देखा। हाँ, तो फिर तब से मतलब ऐसे हम तब तक हमको पता नहीं था कि हमारी हॉबीज या हमारे जो भी इतना मैच करते। वो थोड़ा फील्ड में एग्रेसिव है और मैं लाइक साइलेंट टाइप हूँ, बट इतना ही फर्क है बस। जब आप 5-6 डेज घर जाते होगे तो उस वक्त तो मतलब और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा ना। भैया हमेशा बोलते हैं मतलब वो आ गई फेवरेट स्मृति आ गई तो मुझे तो कोई देखता ही नहीं यार। ऐसे उसका बहुत हमारा चलता रहता है। फिर मैं बोलती थी तू भी जब टूर करता था और वो भी 5 दिन के लिए आता था घर, उसका भी बहुत करते थे। तब मैं बोलती थी इसका ही करती है तू तो मेरा तो करती नहीं है। तो मैं बोली अभी वापस हो रहा है। पूरी कॉलोनी की पूरी अटेंशन 5 दिन सब मेरे पे रहती है। सब जगह से आंटियां बुला रही है खाने के लिए, स्मृति आज तू इधर आजा खाने के लिए। और क्या बनता है खाने के लिए? फेवरेट्स क्या है? जैसे भेल मतलब इज लाइक तीखा भेल। तीखा नहीं, मीठा भेल। मीठा भेल? हाँ मारवाड़ी। हाँ मारवाड़ी, मेरे को तीखा इतना ज्यादा नहीं। करेक्ट। So I'm talking about तो no spicy food, Gabe. सांबा भेल करके तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ मेरा अगर बस में रहता ना मैं आपका गाड़ा ही लेके जाती और हर जगह पे आपको लेके जाती। आईसीसी फोन करके लगवा दे रेडी लॉर्ड्स के बाद। ग्राउंड में डगआउट के साइड पे मैं बैटिंग से पहले के बेल खा के जाऊंगी फिर मैं तो। बाकी मैचेस में ड्रिंक्स ब्रेक होते हैं, हमें बेल ब्रेक। थैंक यू। ये टिफिन बॉक्स ये बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स है। याद आ गई ना स्कूल की? एक्चुअली थैंक यू। बहुत दिनों बाद टिफिन में खाऊंगी। Do you have भेलपुरी? Get one. No, she really likes भेलपुरी. Small portion. Just for her to try. She's only going to try 1 spoon. ठीक है? तो उनको बोलना कि कड़ाकेदार बनाए। Look at this guy. Tell him to make it nice. ऐसे मास्टर ऑस्ट्रेलिया बहुत देखती हूँ मैं, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया। मैं भी। I'm a big fan, मतलब कुकिंग फैन ना। Yeah. मम्मी भी अगर कुछ भी बनाती थी ना, जब बहुत एक सीजन तो मैंने बहुत देखा मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का।
तो मम्मी ऐसे कुछ बना के लाती थी ना, ज्यादा से ज्यादा रोटी भी रहती थी तो मैं उसको स्मेल करती थी, मम्मा तो मम्मी बोलती थी चुपचाप खा ले। क्रिकेट एकेडमी क्यों खोल ली? रेस्टोरेंट खोलना चाहिए था। रेस्टोरेंट तो है, मतलब मुझे ऑफ कोर्स खोलना है, दैट वाज लाइक अ बिग ड्रीम मेरा। दैट्स योर ड्रीम टू ओपन अ रेस्टोरेंट। किस टाइप का रेस्टोरेंट, क्या खाना होगा वहाँ पे? इतना तो सोचा नहीं, बट जब जैसे मेरे पास पहली बार लैपटॉप आया था, मम्मी ने गिफ्ट किया था एक 4-5 साल पहले, तब मैंने फर्स्ट थिंग लैपटॉप में किया था जो वर्ड एक्सेल में जाके मेन्यू फॉर माय रेस्टोरेंट। तो मेरा ऐसे फर्स्ट मेन्यू में था वेज थाली, लाइक विद एवरीथिंग व्हाटएवर दे हैव। फिर मैंने बोला अरे स्टार्टर्स नहीं रहेंगे क्या फिर, तो थाली के रेस्टोरेंट में मैंने स्टार्टर्स भी डाले थे। तो क्या क्या स्टार्टर है? स्टार्टर्स में ऑफ कोर्स भेल तो था, पिज्जा था, मुझे चीज गार्लिक ब्रेड का भी बहुत शौक है, तो वो भी जो भी चीजें मुझे पसंद थी, वड़ा पाव भी बहुत पसंद था। मतलब कार्बोहाइड्रेट की दुकान। यस। जो चीजें मतलब मम्मी बोलती थी ना मत खा बेटा, वही मुझे पसंद आती थी कि हाँ ये तो खाना ही है। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा लेके आओ, पूरी दुकान लेके आ गए। भेल को ऐसे डेकोरेट किया, पहली बार ही देखा मैंने। अनार डाला इसके ऊपर। आज आपका कंपैरिजन जो है, मास्टर शेफ वाला कंपैरिजन सांबा भेल से किया जाएगा। This guy is not mine, give him a hard time. दो जज होते हैं ना। I have no idea what that is. Nice. Texture is good. I'm a fan of the Iron Chef as well. I love Kitchen Nightmares. Every time we go to a restaurant, me and Joey, we're like, this could be better. This is bland. Who is the person who for you is like mentally मुझे अपना गेम थोड़ा वीक लग रहा है, मैं किससे बात करके इसको टॉप अप कर सकती हूँ? Well, I was a big thinker of cricket. मतलब बहुत सोचती थी कि मैं आउट हो गई तो 2 घंटा उस पर पूरा एनालिसिस कर लेती थी, कि पापा को बोलती थी या जो भी मेरे मेंटर्स थे, जो कोच थे, सबसे उनसे बहुत बात करती थी कि मारे मैं ऐसे आउट हो गई, उसका क्या करूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं वो आउट हुई हूँ उसके बारे में सोचती थी, नेक्स्ट मैच में भी आई यूज्ड टू रिपीट ऑल द मिस्टेक, और वो जो पैच रहता था वो मेरा बढ़ जाता था। पर जब इंजरी हुई क्रचेस पे थी, तब समझा कि नहीं यार, मतलब एटलीस्ट यू आर एबल टू वॉक दोज डेज, मतलब सब तो ठीक था, मतलब तुम फालतू में रोते रहते हो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो दैट वे आई रियलाइज कि जस्ट इफ यू एंजॉय क्रिकेट, आई थिंक उतना ही आप किया, और जो आउट हुए आप उसके बारे में सोचो, टॉक टू योर कोच 10 minutes, वर्क ऑन इट, जस्ट लेट इट गो। ये राहुल द्रविड़ की बैट की क्या कहानी है भाई? So Rahul Dravid gave a signed bat to Shravan. So he met Rahul sir and उनको बोले कि आप मतलब इफ यू कुड गिव अ बैट, तो उन्होंने दे दी एंड साइन करके मेरे नाम पे उसने, भैया वाज वेरी स्वीट, मेरे नाम पे बैट। तो आई वाज जस्ट गोइंग टू कीप इट इन शो पीस काइंड ऑफ कि हाँ ये मेरे पास साइन दे। जैसे मैंने उठाया, बोले अरे ये तो बैलेंस क्या भारी है ये बैट का, मैं खेलना चालू कर देती हूँ। So you played with it? Yeah, I played with it. I scored, I think, the double century which I scored. Oh, that was with Rahul's bat. Yeah, I did with that bat. So was this Wonder Boy, Wonder Girl? Was it Rahul's bat or was it Shravan's bat that Rahul signed? No, it was Rahul sir's bat only. अच्छा. Yeah, it was his bat only. But mental conditioning की जो हम बात कर रहे हैं, उससे अच्छे आदमी का बैट आपके पास हो नहीं सकता 200 बनाने के लिए। मैंने वो 4 बार रिपेयर करवाया है वो बैट, मेरे पास 4-5 बैट और होते थे, बट वही बैट मतलब रिपेयर कर करके मैंने बहुत खेला। बाद में फाइनली पापा बोले बेटा अभी बस कर, उस बैट को रख दे, मतलब छोड़। तो अभी भी वो मैंने अच्छे से मतलब एक शोपीस में रखा हुआ है अच्छे से। अच्छा, you don't carry it for good luck? नहीं, इतनी भी सुपरस्टिशियस नहीं होती है, इतनी सुपरस्टिशियस। कुछ है सुपरस्टिशन? वेल पहले बहुत थे, जैसे मैंने बोला आई थिंक दिस इंजरी हैज चेंज मी लाइक इन अ बिग वे। या तो पहले बहुत रहते थे लेग गार्ड पहले इसमें नहीं मिलना चाहिए, मतलब जब आप लेग गार्ड मांगते हो तो आप मुझे पहले इसमें नहीं मिलना चाहिए, मतलब हमेशा से सेकंड या थर्ड में मिलना चाहिए, ऐसा था मेरा। तो मैं बहुत बार पीछे पकड़ती थी, तो एक बार तो हाँ अंपायर ने बोला लॉन्ग वे इनसाइड। मैंने उसको इतना पीछे पकड़ा कि मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं मिलना चाहिए, तो उसका रिएक्शन से मुझे हंसी आने लगी, बोले लॉन्ग वे इनसाइड, तो मैंने उठा के वापस से अंदर रखा। तो वो एक बड़ा सुपरस्टिशन होता था, बट दैट वे अभी तो बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप में तो मैंने सारे ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 मैचेस में तो फर्स्ट ट्विस्ट में ही लेग गार्ड मिल गया, तो ऐसा भी वो तो दिमाग में होता नहीं है मेरे। मैंने 35 साल के क्रिकेट वॉचिंग करियर में मैंने सारे सुपरस्टिशन
देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, आज तक ये वाला मैंने कभी नहीं सुना कि लेग स्टंप गार्ड पहली बार में नहीं मिलना चाहिए। कहाँ से ढूंढना ये सुपरस्टिशन? एक बार मेरा बहुत अच्छा बैच चल रहा था, मतलब आज 5 मैच में कुछ 3 सेंचुरीज, एक डबल सेंचुरी ऐसे चल रहा था, और कभी मिला नहीं फर्स्ट टाइम में, वो मतलब गलती से नहीं मिला, ऐसे कुछ दिमाग में नहीं था। और फिर 5 मैचेस के बाद 6th मैच, विच वाज अ वेरी क्रूशियल मैच, तो फर्स्ट टेस्ट में मिल गया एंड आई गॉट आउट फर्स्ट बॉल 0। तो तब फिर वो मेरे को हुआ कि तब से फिर एक कहीं ना कहीं Never do that again. फर्स्ट बार में नहीं मिलना चाहिए। अगली बार ये लेग गार्ड उसे बोला यू आर स्टैंडिंग एट स्क्वायर लेग, कम बैक। That's hilarious. All right, Gabe. So I was just sitting back. I was enjoying that. I mean, what you said earlier about her being beautiful. I mean, absolutely right. I mean, how could you not? But it's the personality that's even more beautiful. And I'm not trying to be weird, or I mean serious. She is such an engaging person. She's such a relaxed person, and I like what she said because she was talking about the difference of her and Harmanpreet, which is a superstar in Indian women's cricket. How she was fiery on the field. She's like, I'm just not that way. I can see that. Like, she's just relaxed. She's just confident. And it's interesting to me how she kept going back to her injury and how things changed, how she learned from it. I have no idea what it's like to be a world-class athlete. You have an injury and you can't do in your prime what you've been trained to do for her since she was a little kid. Right. But she took that opportunity. And whether she meant to or not, besides that March 20th or June 23rd date, she took that opportunity and she reflected and she took a lot from that and she changed a lot from that. But I love that determination she had where I'm going to get there. I'm going to play in England on this day in the World Cup. I'm going to show up and I'm going to be healthy because from what I hear, rehab is tough. Going through the 5 grueling months of just physical therapy, all this kind of stuff is tough. I love the fact that she had that fire inside and that motivation to move forward. That was probably one of my favorite things that she talked about, just because it shows what kind of a warrior she is. I think that, we talk a lot about this a lot on our channel. Whenever we're watching games live, no matter who we're rooting for, you never wish an injury on an athlete. Recently we saw Chahar get hurt, and I'm a huge CSK fan, right? The CSK dropped the bag on Chahar. Right. And I'm like, oh, man. And, you were like, man, that doesn't look good. And you root for Team India before anything. And then obviously you're a fan of the Mumbai Indians. We never wish injury on anybody. Right. And we're both watching that game and we saw Chahar pull up lame and you're like, oh, dude, it doesn't matter you just never like to see an injury because one injury can derail an athlete's career, period. Right. Okay. And you heard her go back mentioning it because you in your mind know for whatever reason, like a mental block, I cannot do what I used to do. My body won't do or perform the way I want it to perform. And sometimes it's hard just to get over that roadblock in and of itself. Can I jump? Can I cut this hard? Can I take that big swing? Whatever it may be. If you're a bowler, can I just let it go, let it fly with that oomph, So yeah, talking about the injury, that kind of stood out to me that it was a defining moment in her career. Something else that stood out to me was that her path to cricket was much like most cricketers. It usually comes like through family, you know what I mean? Like, mom, dad, whatever, brother. You got to be set on that path, you know what I mean? And I think that's true of any sport, you know what I mean? And it was following her brother, emulating her brother, who was 4 years older than her. I think she said something to that effect. Yep. And he was the one getting all the net time or whatever, and then she'd be lucky to get 10 or 15 balls or whatever. And just thinking about how this has been the same trajectory for my kids, and for my kids growing up. And as a parent, it's always difficult because there's only 24 hours in a day, right? You can only dedicate so much time to one of your kids and that athlete. So if you're training your child specifically, it's difficult. You know what I mean, dude? So I found that interesting. And one of the last things that I think this is the first time I heard somebody mention it,
But there's a lot of cricketers that even you'll get confused. They're like, wait a minute, I thought he was a left-handed batsman. He is, but he's bowling right-handed, right? And like Hayden Walsh Jr. comes to mind or whatnot. Well, a lot of people play, and that's one of the hardest things. And in baseball, you know, you got switch hitters, guys that are naturally right-handed and can bat left-handed, or vice versa, naturally left-handed can bat right. It is one of the hardest things to do. And you've got to start at a very young age. And it's super smart because it gives you an advantage. There's only so many left-handed pace bowlers, right? That's why in the IPL, a guy like, for instance, who got the bag, the left-hander that Bolt, right? Trent Bolt got a huge amount of money because there's not that many guys that can attack you that way. And as a left-handed batsman, you got a natural advantage against right-handers, right? Ball's coming into you. You can see it easier. Same principle as baseball. So I really think that shows you that she's not just a cricketer, but a true athlete. It takes a true athlete to be able to, you know, bat ambidextrous and be able to field in different positions. And I mean, I was just totally impressed with her professionalism. Yeah, I loved also how, you know, it's kind of silly, but she talked about the cooking show that she likes, Master Chef Australia. He's like, oh yeah, me too. It's funny because you watch those shows and you think you're an expert about something, right? And you go out there and you want, you know, the texture's off or whatever. I thought that was absolutely hilarious, and it kind of relates to us here on, you know, CFA. We've been watching for a few years, never played before, and we think we're experts. Like we think we know what we're talking about, and we give this, you know, we don't really think we're experts, so, you know, we have a little fun with it. But one thing that was really cool, she was talking about Goswami, who is, you know, obviously like the godmother of women's Indian cricket, and how she was able to be paired up with her, I think, on her first tour. I mean, that's super cool. And she was like, oh yeah, I'm always this quiet. Because she was so nervous to be with this lady who's just legendary. And then she was able to be with like a current legend, Harman. And she's really gotten lucky to be able to room with different people, get to know different people. He asked, like, who are your friends? And she's naming off like 5 or 6 people. And then they were talking about getting the women's game, you know, into the mainstream. And that's a big push, because we need to be part of that as well, championing that and watching more women's cricket and really pushing it, because it really doesn't matter the gender. Men's cricket is just bigger. It's been around longer and people know the names. And he had mentioned, you know, the way to get people into it is by getting to know the names, the teams, the accomplishments, all that kind of stuff. And she said, we felt we won a World Cup. And she talked about how devastated they were because they wanted to push that forward. They wanted to win. They wanted a competition. And he said, like, how was it to have everyone know your name? She didn't even seem fazed by it like that. Like, I don't really care about that. I want to push women's cricket forward. So, you know, this Women's Cup coming up in a few days is a good chance, a good start for more people to be involved, more people to watch, more people to follow it. So part of CFA Nation, follow women's cricket, follow Women's World Cup. We're going to be talking about the channel from time to time. Join our live streams, join our conversations, and let us know what you know about it. Thank you so much for checking out this Cricket Tuesday this week. Don't forget to like and subscribe. And until next time. That's 6 runs.